Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn English with Avasthi ma'am. Friends, I am Dr. Shraddha Misa Avasthi from Mahatma Basveshwar College, Latur. This is my sixth video in the video series on figures of speech, and in this video we are going to discuss the most important figures of speech, inversion. Friends, let us begin with the importance of inversion. Inversion refers to the reversal of syntactically correct order of subject, verb, object in a sentence. Generally, in English, there is a fairly strict order in which sentences are constructed. In English, sentences begin with subject, subject is followed by verb, and verb is followed by object. For example, it is syntactically correct to say, yesterday I saw a sheep. But an inversion of this sentence could be, yesterday saw I a sheep, or yesterday a sheep I saw. इंग्रजीमध्ये वाक्यरचनेमध्ये शब्दांचा क्रम ठरलेला असतो. इंग्रजी वाक्याची सुरुवात सब्जेक्टने होते, सब्जेक्ट नंतर व्हर्ब नंतर ऑब्जेक्ट. हा क्रम सर्वसाधारणपणे घेतला जातो. पण खूपदा काय होतो की ह्या शब्दांचा क्रम उलटापालट केला जातो. अँड दॅट इज कॉल्ड इन्व्हर्जन. त्यालाच इन्व्हर्जन असं म्हटलं जातं. नाउ लेट अस सी द इम्पॉर्टन्स ऑफ इन्व्हर्जन. Inversion is a term used to refer to the inverting of the normal word order in a sentence or phrase. It may be a phrase, it may be a sentence, but word order is inverted. Word order शब्दांचा क्रम मागे पुढे घेतला जातो. Writers use inversion to maintain a particular meter or a rhyme scheme in poetry. कवितेमध्ये एक लयबद्धता, नादबद्धता यावी याच्यासाठी हा शब्दांचा क्रम बदलला जातो. नेक्स्ट, they use inversion to emphasize a specific word in prose. Even in prose, गद्यामध्ये पण आपण इन्व्हर्जन वापरतो आणि त्यावेळेस आपला हेतू काय असतो की एखाद्या विशिष्ट शब्दावरती आपल्याला जोर द्यायचा असतो. and that's why we make the use of inversion. Inversion and anastrophe are the same things. Anastrophe आणि inversion हे दोन्ही एकच बाब आहे. Next, let us see the examples of inversion, and these are the short examples of inversion, and immediately the correct word order will be given to you. Two columns are given to you. The ocean blue. This is the example of inversion, but the correct word order is the blue ocean. Second example, to the store I will go. This is the example of inversion, but the correct order is I will go to the store. Next example, a cat, fluffy and fat. Correct word order, a fluffy and fat cat. My teacher, kind and generous. Correct word order, my kind and generous teacher. Writes the girl. Correct word order is the girl writes. Shocked I was. The correct order is I was shocked. Tomorrow will come the decision. The correct word order is tomorrow the decision will come. But to add the musical quality to the poem, most of the time the poets make the use of inversion. Now let us see the examples. Helter skelter the parents run. Actually the sentence should begin with the parents. This is subject, run, this is verb, and so the correct word order is the parents run helter skelter. Second one, whom skip the little children. The subject is little children. Skip is a verb. So the correct word order is the little children skip home. Next one, down they came fluttering one and all. Actual the sentence should begin with the subject, and so the correct word order is they came down fluttering one and all.
Next example, over the brown fields they danced and flew. The subject is they. Verb dance and flew. So the correct word order is they danced and flew over the brown fields. Uh, Sentence never begins with such a type of preposition. Now we have to write down the explanation in the exam. So what will be the explanation? The word order is not grammatically correct. What is the here explanation? The word order is not grammatically correct, and so we can identify that is the example of inversion. Let us take down the poem written by William Shakespeare. It is a sonnet in which we find out the example of inversion. Sometime too hot the eye of heaven shine, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes decline by chance or nature's changes course untrimmed. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee. Now here the yellow lines are the example of inversion. Sometimes to hot the eye of heaven shines. Actual the correct word order should be the eye of heaven shines sometimes too hot. Second example, and often is his gold complexion dimmed. And his gold complexion often is dimmed. This is correct order. So long as men can breathe. As men can breathe so long. So long lives this. This lives so long. So here we have seen the correct word order of these examples. Now let us see the examples from Hindi and Marathi. फर्स्ट ऑफ ऑल गुनगुनाती है यह हवाएं गुनगुनाता है गगन गा रहा है ये सारा आलम. In Hindi, grammatically the sentence never begins with verb. Actually, it ends with verb. The correct word order should be यह हवाएं गुनगुनाती है, गगन गुनगुनाता है, यह सारा आलम गा रहा है. But to achieve musical rhythm, the poet can make the use of inversion. Next song सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हम बुलबुले है इसकी वो गुलसिता हमारा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से रश्क ए जीना हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा. सो हियर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा. हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है. दिस इज करेक्ट वर्ड ऑर्डर. हम बुलबुले है इसकी वो गुलसिता हमारा. वो हमारा गुलसिता है हम इसकी बुलबुले है. दिस इज करेक्ट वर्ड ऑर्डर. गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ. जिसकी गोदी में हजारों नदियाँ खेलती है. दिस इज करेक्ट वर्ड ऑर्डर. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. आपस में बैर रखना मजहब सिखाता नहीं. हिंदी है हम हिंदी है. वतन है हिंदुस्तान हमारा. हमारा वतन हिंदुस्तान है. Now these lines are the best example of inversion. Now let us move to the next one. छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए. प्यार से भी जरूरी कई काम है. प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए. खुशबू आती रहे दूर से ही सही. सामने हो चमन कोई कम तो नहीं. चांद मिलता नहीं सबको संसार में. है दिया ही बहुत रोशनी के लिए. Let us see the yellow lines. These yellow lines are the best examples of inversion, and now I am going to tell you the correct order of these lines. छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए. सारी दुनिया किसी के लिए छोड़ दे. ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए. आदमी के लिए ये मुनासिब नहीं. नेक्स्ट वन चांद मिलता नहीं सबको संसार में.
सबको संसार में चांद मिलता नहीं, दिस इज करेक्ट ऑर्डर है। दिया ही बहुत रोशनी के लिए, दिया ही रोशनी के लिए बहुत है। सो हियर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्जन। नेक्स्ट वन, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। सो हियर जरा आंख में भर लो पानी, द करेक्ट वर्ड ऑर्डर शुड बी जरा आंख में पानी भर लो। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी जरा याद करो। जब घायल हुआ हिमालय, जब हिमालय घायल हुआ, खतरे में पड़ी आजादी, आजादी खतरे में पड़ी। जब तक थी सांस लड़े वो जब तक सांस थी लड़े। सो गए अमर बलिदानी, अमर बलिदानी सो गए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में दिवाली थी वो होली खेल रहे थे। जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली, जब हम घरों में बैठे थे वो गोली झेल रहे थे। दिस इज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ए मौसम लगे प्यारा जग सारा। द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज मेरे मन को छूकर तूने क्या इशारा किया। नाउ लेट अस मूव टू मराठी एक्झाम्पल्स। कोलाहलात साऱ्या माणूस शोधतो मी, गर्दीत माणसांच्या माणूस शोधतो मी। हे धर्म देवळेही धुंडून सर्व आलो, भिंती पल्ल्याड त्यांच्या माणूस शोधतो मी। या झोपड्यात आली वाहून ही गटारे, चिखलात हुंदक्यांच्या माणूस शोधतो मी। या संस्कृतीच साऱ्या ही चूड लावली मी, वणव्यात पेटलेल्या माणूस शोधतो मी. See the example. All the lines are written in inversion, but let us discuss only the first two lines and what is the correct word order here. कोलाहलात साऱ्या माणूस शोधतो मी. मी साऱ्या कोलाहलात माणूस शोधतो. गर्दीत माणसांच्या माणूस शोधतो मी. करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज मी माणसांच्या गर्दीत माणूस शोधतो. Now you can here find out the correct word order in the remaining lines. Next example. तडतडणारे ऊन साहतो मराठवाडा, तरी फुलांचे गाणे गातो मराठवाडा. The correct word order is मराठवाडा तडतडणारे ऊन साहतो. नंबर 2, मराठवाडा फुलांचे गाणे गातो. स्वरगंगेच्या काठावरती वचन दिलेस तू मला, गतजन्मीची खूण सापडे ओळखले का मला. So here in the first line the correct word order is तू स्वरगंगेच्या काठावरती मला वचन दिले. This is the correct word order. Now next one. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, झालो खरेच धन्य एक तो मराठी. आमुच्या नसा नसात नाचते मराठी, आमुच्या पिला पिलात जन्मते मराठी. आमुच्या लहानग्यात रांगते मराठी, आमुच्या मुला मुलीत खेळते मराठी. आमुच्या घराघरात वाढते मराठी. All the lines are the best examples of inversion. लाभले आम्हास भाग्य, आम्हास भाग्य लाभले की आम्ही मराठी बोलतो. झाले खरेच धन्य एक तो मराठी, आम्ही खरंच धन्य झालो ती एक मराठी आहे. आमुच्या नसा नसात नाचते मराठी. करेक्ट वर्ड ऑर्डर इज मराठी आमुच्या नसा नसात नाचते.
आमुच्या पिला पिलात जन्मते मराठी. The correct word order is मराठी आमुच्या पिला पिलात जन्मते. You can try to understand the correct word order in the following examples of inversion. In brief, inversion means words are not in correct prose order, and only the aim of the poet is to achieve the rhythm and to add the musical note to the poem. Thank you very much for watching this video till the end and listening to me. The next video will be on personification, and if you like my video, friends, please don't forget to subscribe my channel, and if you like the video, please press the button of like. You share it with your friends and others. Thank you very much.